So this is the Bear 650 for you. यहाँ जैसे मैंने कहा wild honey paint job is what you are looking at, so which is why you get this yellow with the blue accents, and then you get a lot of white as well, including white on the fender. It is based on the Interceptor. एक छोटा सा history trivia आपको देता हूँ session before we continue. Why the Bear 650? तो ये राइड भी जो हो रही है ये बिग बेयर एरिया है कैलिफोर्निया का, उसके आसपास हो रही है, नॉट एग्जैक्टली एट द बिग बेयर लेक, क्योंकि वहाँ फिलहाल अनफॉर्चुनेटली वाइल्ड फायर्स चल रहे हैं, तो दे कुडंट टेक अस देयर, बट वी आर इन द विसिनिटी एंड वी आर सेफ थैंकफुली. एंड या सो वहाँ पे यू हैव दिस एरिड weather, arid climate. You can see over there, यहाँ तो पेड़ दिख रहे हैं, but if you go to the Big Bear region, it is quite arid, in some areas, and Yucca Valley वगैरह जो उसके आसपास है वहाँ पे, और यक्का वैली, काफ़ी सारा डेजर्ट एरिया है. वहाँ पे रेसेस हुआ करती थी, डेजर्ट रेसेस, राइट. इट्स प्रॉपरली फ्लैट लैंड बट विद अ लॉट ऑफ सैंड. सो वहाँ पे डेजर्ट रेसेस हुआ करते थे, बिग बेयर रेस उसको बोलते थे, और वहाँ से इस गाड़ी का नाम आया है बिकॉज द रॉयल एनफील्ड्स बैक इन द डे वे प्रीटी पॉपुलर. Or Eddie was one of the first winners on a Royal Enfield at the Big Bear, and his racing number was 249. तो उसको चल के इन्होंने एक स्पेशल एडिशन भी बनाया है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के दिखाने वाला हूँ. सो लाइक आई सेड, स्टिक अराउंड टिल द एंड टू सी दैट एज वेल. बट बिग बेयर रेसिंग से स्क्रैम्बलर इंस्पिरेशन लेके इस गाड़ी का जन्म हुआ. सो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड द बेयर 650. अगेन गोइंग बैक इनटू हिस्ट्री, जब ये बिग बेयर के यहाँ पे रेसेस हुआ करते थे 1960s में, one bike that started getting exported by Royal Enfield from UK to the US was the Interceptor. अब हमने Interceptor देखी है, not just the 650 but even the vintage one, और जो 650 है that was inspired by the vintage Interceptor, right, that we saw from the 60s. अब वो थी यूके की मॉडल, बट जब ये बाइक उन्होंने यूएस में शिप करनी या एक्सपोर्ट करनी चालू की, तो यूएस की रिक्वायरमेंट थी दैट दे वांटेड अ मोर स्क्रैम्बलर काइंड ऑफ मोटरसाइकिल. तो उन्होंने उस इंटरसेप्टर के ऊपर, उस एक्सपोर्ट मॉडल के ऊपर नॉबी टायर्स लगाना चालू किया. और जो इंटरसेप्टर यूके में बिकती थी उसके जो इंजन नंबर्स थे वो VA से चालू होते थे. द इंजन नंबर यूज टू स्टार्ट विथ VA, बट व्हेन दे सेंट इट टू द यूएस दे स्टार्टेड कॉलिंग इट VAX. द X स्टूड फॉर experimental, right? So that is why that X, and VAX Interceptor is what that bike was. So that became very popular at the Big Bear races as well, because out of the box you were getting these knobby tires which back in the day were very expensive to put. Easily मिलते नहीं थे to begin with, और जब मिलते भी थे तो they were quite expensive. So here Royal Enfield was providing them out of the box. उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी कंपेयर टू द स्टैंडर्ड इंटरसेप्टर, तो इट बिकेम प्रीटी पॉपुलर इन द रेसेस. और वहाँ से इंस्पिरेशन लेके नाउ वी गेट द बेयर 650 विच अगेन is the Scrambler interpretation on the Interceptor, right? So what do you get different? Of course you get knobby tires just like back in the day. तो इसलिए आपको यहाँ पे ये knobby tires नज़र आएंगे. और अगर आप thread pattern देखोगे, those who are quick to notice will know that this is very similar to the Pirelli Rally STR, but these are made by MRF. You can see the MRF logo right there, जिसका मतलब ये है कि ये इंडिया में बनेंगे, इंडिया में मिलेंगे और काफ़ी बढ़िया प्राइस में मिलने चाहिए, इज़ व्हाट आई बिलीव. सो इफ़ यू नीड अ 19-inch फ्रंट and a 17-inch rear that has this kind of a thread pattern, and Pirelli Rally STR अगर आपके लिए काफ़ी महंगा हो रहा है या फिर unavailable है, which is the bigger problem right now, then you have this cheaper alternative now. But how does this tire perform? Should you choose it over a Pirelli Rally STR? Well, I'll talk about it in my review. जब इस गाड़ी को मैं extensively चलाऊंगा उसके बाद I'm going to talk about it in my review, which will be out on Overdrive. So definitely check that out. For example, now for this particular tire, it's called the Nilo Rex, NYLOREX, Nilo Rex. So that is what you're going to search for. Nilo Rex F is the front tire. So those are your tires. So that is the one big change over the Interceptor. The second change, suspension. अगर आप closely इसको देखें, you will see the Showa inscription on it. So we have seen the Showa suspension on the other 650s like the Shotgun and the Super Meteor, and now you get Showa even on the Bear 650. Of course, it's a different suspension, slightly stiffer than the Interceptor, of course, and also compared to the Cruisers is what Royal Enfield tells us. How it behaves on the road is something that I'm going to talk about later. ब्रेकिंग हार्डवेयर जो है बहुत सिमिलर होने वाला है टू द इंटरसेप्टर. द ओनली बिग चेंज इज गोइंग टू बी दैट द रियर डिस्क इज 270 मिलीमीटर्स. इंटरसेप्टर पे आपको 240 मिलीमीटर का रियर डिस्क मिलता है. Then you will also see the obvious changes in the bodywork. We'll come to that in a bit. You get that longer fender. It's a two-tone paint job that they've given it, and there is more space between the tire and the fender compared to the Interceptor, ताकि आप जब ऑफ रोडिंग करो, स्लश पे वगैरह जाओ,
तो इट विल बी स्लाइटली बेटर देन द इंटरसेप्टर। यहाँ पे आपको ये जो इंजन का लेआउट है, जो रेडिएटर वगैरह का लेआउट है, दैट रिमेन्स अनचेंज एंड यू गेट अ बैश प्लेट एज अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरी। सो अगर आप ऑफ रोडिंग बहुत करने वाले हो तो डेफिनेटली पुट दैट बैश प्लेट सो दैट यू डोंट डैमेज एनी ऑफ दैट। But the fender, like I said, extends all the way down so that it can prevent too much dirt being kicked up, especially towards the radiator. Now the engine, 47 PS की output है like the standard Interceptor, but the torque has gone up. It is 56.5 Newton meters of torque, 8% increase in torque. एंड उन्होंने किया ये है कि जो टॉर्क कर्व है उसको पूरी तरह से उठा दिया है। इट्स नॉट लाइक टॉर्क कर्व के बीच में कहीं पे कोई रेफ पॉइंट पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, वैसा नहीं किया है। पूरा टॉर्क कर्व ऊपर चला गया है बाई 8%, एंड दैट शुड इसेंशियली गिव इट बेटर राइड आउट ऑफ कॉर्नर्स, बेटर ऑफ रोड कैपेबिलिटी एक्सेट्रा, इज वॉट रॉयल एनफील्ड टेल्स अस। अगेन समथिंग दैट आई विल वेरीफाई इन माई रिव्यू। जो राइडिंग पोस्चर है वो भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज होने वाला है, बिकॉज द फुट पेग्स थोड़े से आगे लिए हैं और जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा ऊपर लिया है। नाउ one complaint that a lot of us had with the Interceptor is that the handlebar sometimes feels like a lot of reach, बहुत दूर तक उसको आपके हाथ खिंच जाते हैं टू ग्रैब द हैंडलबार। तो वो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे फिक्स किया है, ऐसा रॉयल एनफील्ड का कहना है। रियली किया है कि नहीं, समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन माई रिव्यू। द हैंडलबार सिट्स अ लिटिल हायर। यहाँ पे यू विल सी दीज गैप्स इन द माउंटिंग ऑफ इट। Let me know what are your thoughts about that. पीछे की तरफ नहीं दिखता बट आगे की तरफ दिखता है, and it's consistent on all the bikes. Let me know what you think about it. You also get a bar here. यहाँ पे एक छोटा सा टूल रोल लगा सकते हो या फिर एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट लगा सकते हो when you're going off the road. The rest of it remains the same on the handlebar, so essentially you get similar grips, similar switch cube etc. और यहाँ पे जो मोड स्विच आपको नज़र आ रहा है स्विच क्यूब पे, जब मैं वो दबाऊँ तो आपको जो इस पर TFT इंस्ट्रूमेंटेशन मिल रहा है उसके ऊपर आपको दिखेगा कि इट इज़ toggling the ABS. ABS can be turned off and that's only for the rear wheel. Yes, you also get that TFT screen and it flickers only on camera, not in real life, so don't worry too much about it. So that is the other bit. अब स्टाइलिंग के मामले में आपको यहाँ पे एक अलग सेंटर पैनल मिलता है विद दैट बिग पैनल ऑन टॉप। नाउ ये जो राउंड पैनल है या फिर एलिप्टिकल पैनल है वो निकलता नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पैनल एंड यू विल सी इट ऑन बोथ द साइड्स। प्लस ऑन ऑल द पेंट जॉब्स दे हैव लेफ्ट इनफ रूम, अगर आपको आपका कोई रेसिंग नंबर वगैरह लगाना है एंड यू रियली वांट टू गो ऑफ रोड रेसिंग, स्क्रैम्बलिंग एक्सेट्रा, एंड आपको आपका खुद का नंबर या फिर कुछ डिकैल्स लगाने, यू कैन डू दैट। देयर इज इनफ स्पेस एंड दैट्स ऑन ऑल द कलर्स, दैट्स ट्रू फॉर all the colors. There is enough empty space in there. You also get this contrasting blue seat on this particular color. Some bikes have a black seat, some bikes have a brown seat, so that is going to be the other bit. There is a white piping on it as well to create more contrast, and white Royal Enfield lettering that you see behind. अब अगर सीट का शेप देखें, इट्स प्रीटी फ्लैट फ्रॉम द टॉप, पीछे से इसको उठा दिया गया है थोड़ा सा, सो मूविंग ऑन द सीट शुडंट बी अ प्रॉब्लम व्हेन यू आर गोइंग ऑफ रोडिंग, इज व्हाट रॉयल एनफील्ड टेल्स अस. And it's got that ribbed texture, ribbed effect as well, so that is the other change. Rear fender is also kicked up to go with that scrambler styling, तो it's not just styling, लेकिन आपको काफ़ी सारा उसमें clearance मिलने वाला है between the fender and the wheel. जो सस्पेंशन है वो भी आप नोटिस करोगे कि पीछे का सस्पेंशन भी अलग है। जैसे आगे हमने शोवा के फोक्स देखे विच आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटरसेप्टर, इवन द रियर सस्पेंशन दिस इज ऑल्सो शोवा, इट इज़ डिफरेंट दैन द इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर पे गैस चार्ज शॉक्स आपको मिलते हैं, इसमें वो नहीं आते। You will still get preload adjustability, no adjustment for the front, you get preload adjustability for the rear, और जो wheel travel है वो 115 मिलीमीटर कर दिया गया है, which is more than the Interceptor. So that is going to be the other difference. You'll also see that it's a 2-in-1 exhaust system now, so दो pipes converging into one stubby canister, और इधर ही अगर नीचे देखोगे, so this is where all the emissions curbing hardware is. So that is going to be the other change for you. सो इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या होने वाली है, इसका एस्टिमेट आप लगा लीजिए. व्हाट डू यू थिंक? इट विल बी मोर देन द इंटरसेप्टर, मोर देन द GT, मोर देन द शॉटगन, मोर देन द सुपर मीटियोर, और विल इट बी समवेयर इन बिटवीन? ये एस्टिमेट आप मुझे बोलिएगा. यू आर गेटिंग सम एडिशनल इक्विपमेंट लाइक LED headlights, you are getting the TFT instrumentation, you are getting the different suspension, so all of that could jack up prices is what I believe. But आपका इसका estimate क्या होने वाला है? Let me know in the comments. Let's also take a listen at the exhaust. जैसे मैंने कहा 2 pipes into 1 is what the arrangement is. तो एक बार सुनते हैं how the motorcycle sounds. That's a little glimpse of it, but let me give you a quick listen. So idling पे it's not very loud.
but on the move, especially slower revs पे between say 2000 to 4000 थोड़ा सा grunty sound है, and then on the move it's a very different sounding exhaust compared to the Interceptor. तो रिव्यू को ज़रूर देखना, उसमें you will have more fly-by shots वगैरह जहाँ आपको वो ज़्यादा शायद अच्छे से सुनाई देगा. फ़िलहाल तो हमें प्राइसिंग बोली नहीं है, बट आपको क्या लगता है, विल इट बी मोर देन द इंटरसेप्टर एंड द कॉन्टिनेंटल GT, और विल इट बी मोर देन द सुपर मीटियोर एंड शॉटगन इवन, और विल इट लाई समवेयर इन बिटवीन दीज मोटरसाइकिल्स? आपका क्या एस्टिमेट है प्राइस का? लेट मी नो. आपका क्या एक्सपेक्टेशन है प्राइस का, वो भी लेट मी नो. जो इटली में आइकमा हो रहा है तो उसके आसपास इसकी प्राइसिंग अनाउंस होगी. सो 4 या 5 नवंबर तक इसकी प्राइसिंग आ जानी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो. एंड the bookings will open right after that, and you should be able to start getting deliveries by November mid is what I'm told, या November end latest. So that is one thing. And इस गाड़ी के चलते they are also doing one more apparel tie-up. जैसे हमने शॉटगन के टाइम पे आइकन के साथ टाइप देखा था, वैसे ही एक टाइप अभी आएगा फ्यूल मोटरसाइकिल्स के साथ, या फिर फ्यूल मोटरसाइकिल गियर के साथ, जो एक अलग टाइप का राइडिंग गियर है, काफ़ी विंटेज टाइप का राइडिंग गियर है. इंडिया में आएगा कि नहीं पता नहीं. फॉर एग्जांपल जब मैंने शॉटगन रिव्यू की थी उस टाइम मैंने बोला था वो आइकन का गियर इंडिया में आएगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वाज टोल्ड टू अस, लेकिन इट नेवर केम टू इंडिया बिकॉज अपेरेंटली दे कुडंट वर्क आउट द प्राइसिंग फॉर इट. US में तो अवेलेबल हो गया था, लेकिन आई एम टोल्ड वो इंडिया के लिए प्राइसिंग वर्कआउट नहीं हो पाई ठीक से. सो फ्यूल तो उससे भी ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड है इन यूरोप, स्पेशली इट्स अ स्पेनिश ब्रांड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और काफ़ी महंगा ब्रांड है. तो इंडिया में वो शायद रॉयल इनफील्ड लाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यू कैन स्टिल टेक अ लुक एट दैट गियर. लेकिन इस बाइक के बारे में आपके क्या ख्याल है, लेट मी नो. आई एम गोइंग टू पुट अप अ सेपरेट वीडियो विद ऑल द कलर्स वेयर आई विल शो यू ऑल द कलर्स इन डिटेल. सो डेफिनेटली चेक दैट एज वेल. उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट अ क्लोजर लुक एट ऑल द कलर्स. और सब कलर्स मैंने रियल वर्ल्ड में शूट किए हैं. सो इस गाड़ी के बारे में आपके जो कोई भी सवाल हैं, जो कोई भी आपका फीडबैक है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. इस गाड़ी का मैं फ़िलहाल रिव्यू कर रहा हूँ, सॉ द शूट हैपनिंग राइट नाउ. तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो मैं उस रिव्यू में आपके सवाल डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा. इफ़ फॉर सम रीज़न मैं नहीं कर पाया तो ऑब्वियसली आई विल रिप्लाई टू देम इन द कमेंट्स. सो या तो इस वीडियो पे या फिर ओवरड्राइव पे जा कर के रिव्यू पे के ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, एंड आई विल आंसर देम माई सेल्फ. Thank you so much, Abhay. That was Abhay from Turbocharged. And yeah, so whatever questions you have, post them down below and I will answer them ASAP. Thank you so much for watching this one. Do stay tuned to Overdrive for the full review. It's youtube.com/odmag. And if you haven't subscribed to the channel already, please consider doing that, and also consider sharing this video with your friends and family.